वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करेंगे जी कंजक्शन के एमसीक्यू। कंजक्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था। अ वर्ड दैट मेरली ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस आर अ वर्ड। ठीक है। तो कंजक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन भी इसमें, रिलेटिव एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, थॉट येट, whether or, not only but also, in order that, in condition that, even if, so that, provided that, although, in, much as well as soon as if। तो ये सारे आपने कैमुलेटिव, एडस्टेटिव। ठीक है। उसके बाद आफ्टर, ऑल दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, एज, बी का बिफोर, एरा, इफ, अनलेस, लीस्ट, सिंस, दैट, टेल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, विदर, वेयर, व्हेंस, विदर, व्हाई, हाउ, देन। ये भी आप लोगों ने देखे हुए। टाइम के लिए भी मैंने करवाया था आपको। बिफोर, टेल, अनटिल, सिंस, आफ्टर, आर, व्हेन और वाइल भी करवाया हुआ था। आज हम इनके जो है वो एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इधर इन फ्लैट और शेयर रूम। उसके बाद फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच, वकार नॉक एट द डोर बट नो बॉडी वर आंसर। तो ये क्या है? ये भी कंजक्शन है। उसके बाद ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इधर इन फ्लैट और शेयर रूम। उसके बाद फोर है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लासेस। तो ये कंजक्शन है। उसके बाद कंजक्शन विच एक्सप्रेस कैन इंटरफेस इज कॉल्ड। तो ये इलेक्टिव कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन ज्वाइन टू क्लासेस को ज्वाइन करता है। वाई वी सेंड डॉक्यूमेंट वंस द बॉस हैज साइन इट। उसके बाद शी हैड एक्ट नो अनप्रोफेशनली दैट शी वाज डिसमिस इमीडिएटली। उसके बाद राइट डाउन बोथ योर नेम एंड रोल नंबर। करेक्ट सेंटेंस है, बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन आर पुअर्स। उसके बाद 11, ही is so much worried about his car issue that he gets to the garage। उसके बाद 12, he have had some much trouble that he parked the car in the garage। उसके बाद 13, select the correct option। her economic situation has got even was since she gave up her job because of her illness। 14 है, but is which part of speech। तो ये कंजक्शन है। उसके बाद 15 है, the house is large but is quite old fashioned। उसके बाद 16, my elder brother has got a motorbike but I have not। उसके बाद 17, my sister is not studying hard but I am। उसके बाद 18, I watch TV but my sister don't। उसके बाद 19, you have not passed the exam but we have। उसके बाद 20, nobody but you could be selfish। 21st, the house is much larger but is a quite old fashioned। उसके बाद 22, he does not know the answer even I have told him several time। उसके बाद although he eats a lot he is losing a weight। उसके बाद 24, running down the street the dog barking loudly। तो while running down the street the dog barking loudly। 25, although he worked hard enough but he could pass the exam, my father does not like music and neither I do। उसके बाद you can go neither by train nor by bus, choose the right one। neither
Ali nor Aslam has taken his test. उसके बाद he is looking for a residence either in a hostel or in a room. उसके बाद we shall go whether he goes or not. 31st, the south of Pakistan is a coastal whereas the north of the mountain. उसके बाद his behavior was unprofessional enough so be terminated immediately. 33, it's imperative that you study abroad as so as to strengthen your listening and speaking skill. के बाद 34, I don't mind studying home to take care of kid provided you are easy. उसके बाद 35, he was stealing bank when the police caught him by this act. Choose the correct sentence. I shall take my food when you go. उसके बाद choose the correct है जी. He plays hockey as his brother. उसके बाद 38, does Aslam know about the dinner next week? I am not sure. I will ask him when I see him. उसके बाद the doctor is not sure. However, that thing is worth all that money. 40. There is a party next week, so I think I can go. ये कंजक्शन है. उसके बाद farmer expecting that crop will be profitable unless locusts attack. उसके बाद Azmat has not been in school for many years and he is likely to find learning English difficult, although I think he speaks English. I felt as I were the center of the universe. उसके बाद nobody gets anything unless so they have enough money. उसके बाद we should take a taxi even if it is more expensive. Majid had a heart attack while he was driving. उसके बाद they said that we take exercise every day. उसके बाद 48, not only her parent but also her class teacher was proud of her result. उसके बाद 49, not only teacher but also student were laughing. उसके बाद he not only read the book but also remember that he read. तो ये क्या है? ये कंजक्शन है. तो ये थे जी आपके पास पेपर के एमसीक्यूज कंजक्शन के बारे में डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं. इनको याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह के पास.